हेलो। आज लगे जाते हैं। हेलो। मैं हूँ फरहान खान। मैं आज से क्या कहते हैं, अ, एक नए पैकेज ब्रांडिंग पे काम करने वाला हूँ, नई ब्रांड की ब्रांडिंग पे। बेसिकली अभी मेरे को नया काम मिला। दिस इज माई पर्सनल प्रोजेक्ट, नॉट द पेड प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट। ये मैंने, ये जो जितना भी आप देख रहे हो, ये जो है ब्रीफिंग है, जो भी है, ये सब चीज़ें मैंने चैट जीपीटी में सब चीज़ें प्रॉम्प्ट डाला, बाकी मुझे कैसा क्या चाहिए मेरे को, आपसे उसने मेरे को एक रफ ब्रीफ बना के दे दी। उसमें स्टोरी है ब्रांड की, ब्रांड क्या करना चाहता है, किस रास्ते जाना है, फाउंडर कौन था, टारगेट ऑडियंस कौन है, और किस भी पोजीशन में रहना है उसको, इसकी वो कौन से प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है इतने टाइम में, और तो ब्रांड वैल्यूज क्या है। तो उसी ब्रांड के मैं पहले स्टेज पे हूँ, जो मैं पहले शुरू में करता हूँ, मतलब जो ब्रांडिंग के जो शुरुआती स्टेज है बेसिकली। तो उसमें मैं क्या क्या करता हूँ, है ना। तो मेरा सबसे पहले जो स्टार्टिंग स्टेज होता है कि ब्रीफ तैयार करना। बेसिकली एक मेरे पास तो कोई क्लाइंट है नहीं। अभी ये प्रोजेक्ट एक आर्टिफिशियल क्लाइंट्स के लिए, बेसिकली एक चैट जीपीटी के जरिए मैंने वहाँ से बैक एंड फोर्थ कर करके उसमें काफ़ी चीज़ें करी, उसमें हटाया घटाया बढ़ाया करके, तो ये 10 मैंने वसीले की निकाली। तो उसके बाद जब वसीले की निकाली, तो अब हम जो नेक्स्ट स्टेप आता है, अंडरस्टैंडिंग द ब्रांड, व्हाट इट इज, why it is exist, why founder thought it is to be existed, what is the need to be it existed, what is the story behind it, and what this is going to do that. So asking such questions gives the wide perspective. What should be, what should be done to the brand, what should be avoided, what, in which direction did that brand wants to go, and what kind of people they want to target, and what are the products that they are going to be sell, and how they want to be, how they wanted to be presented in the market, and what kind of message they want to deliver to the person. So that's the reason, that's why I do. And from the brief, I get all the information that you can see on the screen. This is the target audience, the pricing, which by reading and analyzing the brief, I get to the point. The first thing that I got is that the whole idea is presented between the authenticity of the Indian food culture, because the founder, Arman Khan, is who is working in the food distribution industry for the last few years. He he get he noticed something, that most of the brands are working for the mass production, like for the convenience. They those brands does not have the authenticity of the juices which he is used to. In the childhood, he used to drink juices from the which his family prepared for him. The local those the vendor made the juices. The feeling that the Arman Khan get from those juices, he is not getting from this, because though in today though the brand which are producing the juices in today's market are not as authentic. They're just putting the sweeteners in the artificial flavor added. Most of the brand specifically says that the their juices, they have much more water and added preservative than the actual food content in them. So experiencing such things from the current brands, so the founder decided to start his own brand, called Rasila, which he wants to introduce to the world to as showing the essence of the real food. What is the real food? What is the real Indian food culture? How it uh, how it tastes, how it feel, or what is the experience when you have the real juices.
made from the real Indian foods, sorry, near in foods, है ना? So that's how let's see what I analyze and get from the brief and what I have what I have given to the brief. Yes. The first thing is the base, the main, the all of the thing is the main whole brand idea is based on the food and flavors of real Indian culture. मतलब the culture of the full of fruit. India is a full of fruit, है ना? Which is local to the market, which we have grown, which we have grown to eat, sorry, which we have been eating since our childhood, having the drinking juices. So the brief is all the maximalism, the brief that the things that there are that the brand should not be like, as a, we know that India is a maximalist country. We like something, everything vibrant, colorful, and exuberant, something that makes us because we in our history we maximalism and the original fruits the from fruits which is natural, tasteful, no added the natural sweetness which more which the brand mass brand add sweetness to the juices to make little very pretty. And the founder wants the brief that I get is they want to feel the rural and the semi-urban India because the most of the food that you get the original and the fresh the authentic food taste you will only on rural and semi-urban area because there is the most because they are the most accessible to the masses in the land. Rural because there are the trees and the farms are there. Semi-urban they are almost they are the most trees are there, the parks are there, the gardens are there, the connection to the people who taste the field. And because most of the people are from the people living in the metro cities, most of their families and they or their parents are from the rural and the semi-urban areas, and now they are running in the better fields, है ना? So the founder wanted to show the richness and the variety of Indian food. ना जैसे ये रहा इंडियन एंड वैरायटी फूड्स तो कहना चाहता था वो लेकिन get the color which is है ना वैरायटी ऑफ इंडियन फूड्स को चाहता है दिखाना कनेक्शन ऑफ द पीपल होगा जैसे अभी जूसी जो होना चाहिए था रस रस निकलता है जूसी जो जूस बेसिकली जूस है जो उसके अंदर ऑथेंटिक फ्लेवर हो द एसेंस ऑफ द रियल फ्रूट अगर आप उसको पियो जैसे अगर आप असली वो फ्रूट खा रहे हो या बेसिकली जो यू गेट द फील ना है ना तो और बेसिकली रसीला द वे द नेम द रसीला दैट्स हाउ यू गेट it's basically Rasila what is? Rasila something that you get the essence juicy होता है the essence of the fruit basically आप निचोड़ दो तो essence से तो बाहर आता है that essence of the fruit हो गया तो जो रिच उस जो रस के अंदर जो richness होती है जो उस vibrance होता है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं मतलब फ्लेवर्स आप करते हो इस तरह से ये हो गया फिर मोस्ट ऑफ द जो जो होता है जो बिकॉज द फाउंडर इज फ्रॉम द गाजियाबाद so the most of the fruits he's talking about they come from the northern part of the India, where basically Bihar, UP, MP, and Punjab, Haryana, they're the most fertile, or Himachal and because more of the thing that he is the fruit is from these regions. These are the authentic for him, which he experimented in his childhood. जैसे अब नॉर्थ इंडिया में मोस्ट फेमस क्या है मैंगो हो गया जामुन है अमरूद बेसिकली गुआवा तरबूज द वाटरमेलन नींबू पानी हो गया एंड द मेनी मोर fruits that I should have mentioned that but this is are the my initial thoughts है ना तो अब इसके बाद क्या है why founder love why founder love that because
he wanted to, because they are locally sourced, they're helping the farmers also. Locally sourced, तो the local economy के होते हैं. Though, which it feels, it connects with his childhood, है ना? Authentic है होगा, fresh, locally sourced the fresh भी होगा, locally so he can assure that it is authentic हो गया, the taste of the original foods, connecting with its child, जो मैंने बोला childhood से हो गया. अच्छा जो core जो message जो है, जो core जो मैं बोलना चाहूँ, to he wanted to feel the others, wanted others to feel the true food's taste, which the uh, today नहीं करते आज के लोग, आज के टाइम में नहीं होता ना बेसिकली. लवली स्वीट हो गया, अब हम इंग्लिश पे जाते हैं, स्कूल ऑफ फ्रूट हो गया, ओरिजिनल है. अब जो इसमें मार्केट में, अब जैसे फाउंडर है कई सालों से, बेसिकली ही इज इन द फूड इंडस्ट्री फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. ही जस्ट स्टडीड द बिजनेस एंड द थिंग. तो जब यहाँ पर रहते रहते उसने अपने लिए जो बेसिकली उसको फील से भी कि यार ये मिल नहीं रहा, और ये चीज मिल रहा है, हम अगर मुझे नहीं मिल रहा तो और भी लोग नहीं मिल पाऊंगा, तो उसने सोचा इस क्यों ना इस मार्केट पे फुलफिल करें. बेसिकली उसमें जो आज के मॉडर्न जो ड्रिंक्स है, अलग अलग तरह, आई वांट अलग अलग तरीके के जो ब्रांड्स हो गए जो फूड ड्रिंक्स होते हैं, तो उसमें उसने फोकस, जो मोस्टली दे आर रीचिंग, दे आर फोकसिंग ऑन द selling to the real masses, not on the product itself. They are for the sweetness add करते हैं, मुझे टेस्ट जो ऑथेंटिक होता है, तो आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो मोस्टली इनका ओरिजिनल फूड कंटेंट से ज़्यादा उसके अंदर वाटर एंड अदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, और ना वो टेस्ट आता है हल्का हल्का सा. तो ये देखो, वो बस क्या ये लिखा हुआ निकल रहा है. ये मार्केटिंग में फोकस करते हैं, नॉट ऑन द प्रोडक्ट होता है. कन्वीनियंस के चक्कर में वो अपना एसेंस यूज ऑफ फ्रूट एसेंस हो जाता है. ब्लेंड sweetening to water the mix with the low amount of artificial flavor. The artificial flavors बता रहा था, don't have the taste of the real juice, कुछ फ्लोर नहीं कर पाते थे. तो उसको उसने टैकल करने के लिए सब किया. मिशन, अब बेसिकली जो ब्रांड है रसीला का, जो रसीला है, रसीला का जो मेन vision है, he wants to create a brand, a product that is enjoyable, that is enjoyable, साथ में enjoyable हो सकती है, फैमिली के साथ हो, डिलीशियस भी हो, ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ इंडियन फूड जो हम लोकली जो मिल जाते हैं उसके भी घर में निकाल के, और एक्सेसिबल हो, बिकॉज कि आप जैसे जानते हो कि अब ऑथेंटिसिटी की तरफ जाओगे. अब यहाँ पे अब जो मोस्टली जो ब्रांड्स है, जो स्वीटनेस वगैरह हो गया, जो सिर्फ मार्केटिंग वगैरह पे फोकस करते हैं, नॉट ऑन द प्रोडक्ट. अब जानते हो कि वो, अब अगर ओरिजिनल पे चले जाओगे तो उतना अच्छा नहीं होता. अगर आपको कोई चीज़ सस्ती मिल रही है, नॉट नॉट दैट सस्ती मिल रही है बहुत ज़्यादा, और आपको कहीं बताया जा रहा है ऑथेंटिक नहीं होती, उसमें काफ़ी चीज़ें मिलावट करी गई होती है. दैट आर some of the impurities are not, they are not accessible. So we wanted to give it to people the essence of the real food, but ज़्यादा महंगा बनाओ. Because we, when we research, and the founder researches that when we go for the actual product, that the actual food product content is much more, many the price of that product goes on the upper side of the range. So we try to make it in the mid-range, not in the mass range, no, not the lower range of the price range, but we try to be in the mid, where which is accessible to the many people, but not है ना. तो इसका यही चीज एक्सेसिबल हो कि सब खा सके, सब पी सके, तो ये चीज हो गई. तो रिफ्रेशमेंट को रिफ्रेशन, जो पियो द रिफ्रेश एकदम ताजा ताजा से लगती है कि अच्छा तो क्या पी लिया. तो देर ज्यादा मिशन, तो विजन क्या है, अब बेसिकली अब मिशन तो हमने कर लिया कि ये चीज होनी चाहिए. अब लॉन्ग टर्म में क्या देखता है ब्रांड, तो ब्रांड वो देख रहे हैं कि आगे चले जाए जो भी हो, कि लोग लव ब्रांड हो, लोग उसको पसंद करें. उसके अंदर अभी तो हमने 6-7, अभी 5-6 ही हो करके अलग अलग तरह के फ्लेवर हो, एसक्यूज, नए 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 एसक्यूज निकले, अलग अलग तरीके के सेगमेंट्स हो, कैटेगरी, सार हो, खट्टा हो, स्पाइसी, मीठा, सॉल्टी, जिसमें कच्चा कैरी आ सकता है, स्वीट मैंगो, ऑरेंज, गुआवा होगा, स्पाइसी हो सकता है, जलजीरा टाइप खट्टा हो गया, नींबू पानी टाइप. तो मीट विद द एक्चुअल फ्रूट इंग्रेडिएंट जो हम लोग पहचाने जाए, कि अगर आपको कभी विजन द ब्रांड wanted to be known, brand wanted to be known as the
The brand is something, someone who made their product with the original ingredients and the roots. We does not include, we does not do any मिलावट something है ना thing. तो और साथ में if something someone who wants to celebrate the Indian food and the culture, so they so the image that the brand that comes in their mind, if they want to celebrate Indian culture, if they want to celebrate the food, if they want to taste the real Indian food, the our brand should come in their mind, है ना? अब देखते हैं basically the founder के बारे में. The target audience. The founder is not a founder is himself is young. He is around 38, 28, 30 or 32. It is between the 28 or 30. I haven't asked. है ना? So he created a brand, or mainly the main focus would be on the young consumer. The between the young consumer, the between uh, so the ages between 18 to 35. Basically, he is targeted basically दो है ना? Young professionals और स्टूडेंट्स, बिकॉज वही होते हैं 18 से 38 के बीच, इनको टारगेट किया है, तो हमारा जो ब्रांड जो होगा ना वो वो बेसिकली वो एक तो एनर्जेटिक होना चाहिए, क्योंकि ये जो जो सेगमेंट हम चुन रहे हैं, बेसिकली जो हमारा मेन सेगमेंट जो है, ये बहुत एनर्जेटिक, दे आर दे आर एनर्जेटिक है ना. तो ये हो गया एनर्जेटिक, एनर्जेटिक होगा. दे आर ट्राइंग मल्टीपल थिंग्स है ना, तो वाइब्रेंट भी होना चाहिए, जॉयफुल होना चाहिए, पिए तो दे एक्सपीरियंस है, बिकॉज आज की जो जनरेशन है, जो ये वाली जो जनरेशन है 18 to 35 वाली, ये एक्सपीरियंस को ज्यादा मैटर करती है, नॉट द प्रीवियस जनरेशन दैट दे वांटेड टू जस्ट चीजें हो गई, मिल गया, खा लिया वगैरह. दे they wanted, if they are putting money in that, they should feel better, they should experience joy. It should be something that they prefer much, the whole, they prefer experience, you know. If that brand or the product is not giving them something, some reason to feel something, they don't want to go there for again, ना some. तो इस जो जो पर्सनैलिटी इनकी है, तो जॉयफुल होगा, दे they are very aware about, and they are very much aware about the things coming today in the market, है ना. They are looking for the authentic fake, something that is in the very, as Indian consumer are, and we know that Indians are very value conscious. They want value, they want experience, they want something that accessible basically. They want to feel the everything, ना. I know that I'm speaking gibberish, but I am speaking English. So भी हो गया. और जो सेकेंडरी है, जो कि अब इनको टारगेट करके पीपल वांट टू ईट, दो ये फैमिली, फैमिली, फैमिली is everything come, but we the main focus and the brand is going to be designed or the communicate, around them, है ना, communicate around इट. ठीक हो गया, फन हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, पिएंगे मस्त आएगा, परिवार के साथ भी कहीं बैठे हुए हैं, या कोई मेहमान आ गया, या कभी बैठे हुए हैं सब घर में, बैठे एक दूसरे के पास पकड़ा गया बेसिकली. देखो प्राइस बेसिकली जैसे मैंने बताया था, इट इज नॉट फॉर मासेस, इट इज नॉट फॉर द मासेस, बिकॉज मजबूरी है, जब इफ यू आर गोइंग टू यू कैन गो दैट बिकॉज क्वालिटी भी देनी है, बट नॉट इन दैट रेंज. क्वालिटी जाएगी तो फिर मास वो जो लोअर प्राइस पे रहेंगे, फिर थोड़ा बहुत तो उसको भी सस्टेन करना है, बिजनेस को भी. और नॉट द मास, हम बिकॉज हम सबको देना चाहते हैं, सबको फील करना चाहते हैं, जो एक्सेसिबल जिसे उनके लिए है. इसलिए मिड रेंज है, जो मोस्ट ऑफ द जो हम रखने वाले हैं, क्या 40 to 35, बिकॉज ये 40 होगा, 20-25 ml, तो ये 20 होगा, या तो जो भी होगा, ये होगा 500 ml के बीच की बात, 500 या 1 लीटर की. Later maybe it go my higher. I don't know what is the of the tone of the voice, tone of the brand. जिसमें the we are the communicating, when how we are going to communicate, what kind of tone that this brand is going to carry, the how it's going to communicate with the consumer, how.
what kind of copy and what kind of if we are going to make something